A round of applause. Thank you, dignitaries. You may please be seated. As a token of our appreciation and a gesture of warmth, we'll now present planters to our distinguished guest. I request Professor Anil D. Sahasrabudhe, Chairman NBA, to kindly welcome our chief guest, Honorable Union Minister of Education, Shri Dharmendra Pradhan ji, with a planter. Let's once again welcome our distinguished chief guest with a round of applause. I now request Professor Anil to kindly welcome Honorable Minister of State for Education, Dr. Sukanta Majumdar. Thank you, Professor Anil. I now request Dr. Anil K. Nasa, Member Secretary NBA, to welcome Sri Vineet Joshi, Secretary Higher Education. I now request Dr. Nasa to welcome Professor T.G. Sitaram, Chairman AICTE. Dr. Nasa to now please welcome Professor Anil D. Sahasrabudhe, Chairman NBA. Once again, thank you, dignitaries. Your presence today brings great strength and inspiration to this ceremony. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of the Department of Higher Education, Ministry of Education, I, Prerna, extend a very warm and hearty welcome to all the distinguished dignitaries, academicians, thought leaders, esteemed representatives from institutions across the country who've joined us here at the iconic Bharat Mandapam. We are gathered here for the release and award ceremony of India Rankings 2025, a momentous occasion that celebrates excellence, inspires competitiveness, and encourages continuous improvement in higher education institutions across India. This year's India ranking holds a special significance as they mark the 10th edition of this landmark initiative, which calls for a round of applause, reflecting a decade of sustained effort to benchmark quality and drive transformative change in Indian higher education. To begin the proceedings, may I now invite Dr. Anil Kumar Nasa, Member Secretary NBA, to deliver the welcome address. Can you please welcome him on the dais? Thank you, ma'am. Good morning to all of you. A warm and hearty welcome from National Board of Accreditation to all of you for the event of release of India Ranking 2025. As you know that this is an annual exercise and we are into the 10th edition of the release of India Rankings. And we are very much pleased to have with us Shri Dharmendra Pradhan ji, Honorable Minister of Education. A warm welcome to you, sir, and who has kindly consented to release the ranking and grace the occasion. My heartiest welcome, sir. We are also delighted to have Dr. Sukanta Majumdar ji, Honorable Minister of State for Education. A warm welcome to you, sir, and who has also consented to share his views and grace the occasion. Thank you very much, sir. I welcome respected Shri Vineet Joshi ji, Secretary Higher Education, who is also the
Chairman of Implementation Core Committee of NIRF. I also welcome Professor T.G. Sitaramji, the Chairman of AICTE, and Professor Anil D. Sahasbuddhe, sir, Chairman NBA. A warm welcome to all of you and the dignitaries, and I also extend my warm and heartiest welcome to all the participating institutions, their representatives, the directors, the vice chancellors, deans, HODs, faculty members, NBA coordinators, nodal officers of NIRF. I also extend my heartiest welcome to senior officials of the Ministry of Education, UGC, AICTE, the InfliBnet, and all other distinguished invitees who are gathered here to witness this 10th edition of Release of India ranking. I'm also welcome our representatives and media persons, the friends, and all those who are present on the line. A heartiest welcome to all of you. We are delighted today that we are witnessing this 10th edition of India rankings. We started our journey in 2015 and 29 September once it was announced. And with the first ranking coming up in 2016 with only 4 categories. And at that time, the number of unique institutions were 2,426, and there were 3,565 applications, which has now risen to 7,692 unique institutions and 14,163 participants. I'm really thankful to all of you for the tremendous support you have given to the NIRF, and from 4 categories now we are today releasing the 17th category. The last year it was 16th category, and the 17th category is the Sustainable Development Goal. I once again welcome you all and wish you a good luck for today's ranking release. Thank you very much, sir. Thank you, sir, for your gracious words of welcome. It is now my privilege to invite Professor Anil D. Sahasrabudhe, Chairman NBA, to address the August gathering. Let's welcome him on the dais. सभी को नमस्कार। मंच पर उपस्थित हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी तथा मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर सुकांता मजूमदार जी, हमारे उच्च शिक्षा के सचिव डॉक्टर विनीत जोशी जी, एआईसीटी के अध्यक्ष डॉक्टर सीताराम और एनबीए के सेक्रेटरी डॉक्टर अनिल कुमार नासा, और यहाँ उपस्थित डायरेक्टर्स ऑफ आईआईटीज, एनआईटीज, आईसर्स, आईआईएम्स, सारे सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस, central universities, vice chancellors also of state, public and private universities. On behalf of NBA and NIRF ranking system, I welcome you all once again to this gathering. सबसे महत्वपूर्ण जो डॉक्टर नासा ने कहा कि ये जर्नी 10 साल पहले 2015 में एक कमेटी बनाकर 5 major parameters starting with teaching, learning resources, research outcomes in terms of research publications, patents, citations, subsequent student outcomes in terms of their results as well as their employment. Fourth one, in terms of inclusion and diversity, which no other country or no other world ranking body takes care of, which is very important for our nation. And lastly, which is also there in most of the ranking systems, that is perception. With these 5 major parameters, with 30, 30, 20, 10, 10% of weightage, we started with this journey. There were minor changes over a period of time. This is a 1 decade of completion of the ranking process. Whenever one ranking is announced, there are suggestions, criticisms which come in, and we do deal with each one of them, and then slight change is made over a period of time. But I would like to assure you that out of all the rankings that take place across the globe, ours is the most transparent process in terms of data acquisition, followed by that transparently putting up that data by the respective institutions in their website, so that if there is any competing institute which finds that the data is not accurate or slightly fudged,
There are complaints received, and we do a lot of due diligence in order to clean up the data. There are a lot of interactions which take place with the head of the institutions when we have some doubts about the data. I think there is no other system in the world which takes care of this. That is one part of the story. Despite that, there have been articles which are received in the newspapers about certain aspects. So one of the challenges which in the last couple of years, which has accentuated, is that of the retraction of papers. And there were articles on that. And therefore, we decided this time to have negative marking for retracted papers over the last 3 years. And also the citations which have been taken from out of those retracted. Naturally, if the paper itself is retracted, there is no value for the citation from out of that paper. So we have double whammy negative marking, which we have introduced for the first time. But institutions are warned that hereafter be more authentic, more truthful, more honesty in publications, because research ethics is very, very important. And if this is followed, it's well and good. Otherwise, the negative marking weightage may have to be increased over a period of time. And if still some institutes continue to follow bad practices, may have to debar from the ranking process itself. These are all thinking which is going on. As far as NIRF indirect effect is concerned, number of institutions applying for QS ranking have increased, Times Higher Education ranking have increased, and even the results have been increasing. For example, from mere 14 institutions in the QS ranking in 2016, today there are 56 Indian institutions which are appearing. In terms of Times Higher Education ranking, we were only 17 in number in 2016. Today it is 107 numbers. So both minimum 5 to 6-fold increase in the number of institutions found ranking is observed. As far as our number of institutions participating in NIRF itself, from 3,500 it has increased to 14,000. So everywhere there is a quantum jump which is observed. Last but not the least, because of the several articles, we decided in every result there are some outliers. In 2022, some appeared at some rank 23. There is a variation. If there is a couple of rank variation, it is acceptable. But if there is a larger variation, we identified such outliers and had a third party Ernst & Young review on those. Limited edition of number of such places where the ranks have gone up and down. And we are very happy that all the data based on what you have submitted, the work that is done by NBA has been error-free. With these few words, once again, I welcome all of you on this very important occasion. I hope more institutions will join, and then we have the true implementation of NEP also taking place through this ranking process. Thank you very much. Jai Hind, Namaskar. Thank you very much, sir, for your insightful address. May I now request Shri Vineet Joshi, Secretary Higher Education, to kindly address the gathering. Can we extend a warm welcome to him on the dais? आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, आदरणीय राज्य मंत्री शिक्षा, प्रोफेसर टी.जी. सीताराम जी, प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे जी, डॉक्टर अनिल कुमार नासा जी, मेंबर सेक्रेटरी एनबीए, distinguished vice chancellors, directors, principals, distinguished guests, representatives from various institutions of higher education, media persons, and my dear friends. I once again welcome you to this release ceremony of India Rankings 2025. As Professor Sahasbuddhe said, today marks a significant milestone as we celebrate the 10th consecutive edition of NIRF initiative. This is an indigenous initiative which ranks higher education institutions across the country in our own different context. The National Institutional Ranking Framework, that is NIRF, which was started in November 2015 by the Ministry of Education, has served as a credible, objective, and transparent mechanism to assess and evaluate institutional performance across a wide range of categories and disciplines. Continuous assessment, evaluation, and ranking
on highly objective and coherent parameters underscores a robust, reliable, and efficient ecosystem. It is a commitment of the institutions as well as that of the government for continuous improvement. India rankings today deploy 19 highly objective parameters categorized into 5 broad generic categories. The India rankings successfully provide a comprehensive reflection of quality of teaching, learning, research, publications, and their impact in terms of graduate outcome, peer and employers' perception of our institutions of higher education. Noteworthy changes in 2025 rankings included, as Professor Sahasbuddhe said, negative marking for retracted articles. Moreover, removal of self-citations under research and professional practices for all categories and subject domains introduced last year was continued this year also. As we note that there has been growing participation and acceptance amongst the higher education institutions, and there has been a remarkable growth of 30.6% in just 1 year, and an astonishing 297% increase since the rankings began. This expansion reflects the growing confidence of institutions in the process of ranking and recognition of India rankings as a trusted, data-driven evaluation framework. The credibility of India rankings rests on rigorous data collection, verification, and the institutions themselves. Around 70% of the data comes from the participating institutions, while the remaining 30% is drawn from trusted third-party sources such as Scopus, Web of Sciences, etc. The data sourced to participating institutions undergoes a rigorous process of diligent verification and triangulation. Inconsistencies, contradictions, and outliers are identified and verified through a committee of domain experts, and this time a third party verification has also been done. Institutions are questioned, if need be, about their data validity and requested to submit documentary evidences if required. The NIRF team uses triangulation methods to detect and correct data in consultation with the concerned institutions. The galvanization of Indian higher education institutions and the competitive spirit thus generated has increased India's performance in international rankings also. There has been impressive growth in the representation of Indian higher educations in all global rankings, which reflects the growing global reputation of Indian higher education system. As we release the India Rankings 2025 today, I extend my heartfelt congratulations to all the institutions that have excelled and secured top ranks across various categories. The work begins today. We need to remind ourselves about the objectives of India Rankings. The first objective is to inform the students properly. Inform not only by the institutions themselves, but by the higher education institutions about which area an institution is good. Unfortunately, some of the institutions have used these rankings as a tool of marketing. This needs to be stopped. Rather than that, we need to inform the students about what area an institution is good so that an informed choice can be made by the students. India ranking mainly is meant for the student community. Second purpose is, which we should be remembering today, is about competitive spirit. This rankings of today, some of the institutions have done better than what they did in the last rankings. They need to continuously improve. Some of the institutions have lost their rankings. I am sure that they will look into their efforts and try to improve further. In conclusion, I call upon all of you, directors and vice chancellors, to not only strive to achieve higher ranks in India rankings, but also lead globally in research, innovation, and societal impact. Let us work hand in hand to foster an environment of excellence, innovation, and inclusivity in the higher education system of the country. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much, sir, for your inspiring and informative address. With due respect, I now invite on the dais Dr. Sukanta Majumdar, Honorable Minister of State for Education. Can we extend a gracious warm round of applause on the dais?
नमस्कार। मंचासीन माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री, श्री विनीत जोशी जी, सचिव उच्च शिक्षा, चेयरमैन एआईसीटी टीजी सीताराम जी, चेयरमैन एनबीए प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे जी, मेंबर सेक्रेटरी एनबीए डॉक्टर अनिल कुमार नासा जी, respected vice chancellor, directors, officials of ministry as well as NBA, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is an honor to be a part of this 10th edition of India ranking, an annual exercise. Rather, I should call it the annual celebration of the excellence of the Indian academic institutions, especially the higher educational institutions. The journey started, as mentioned by my other speakers, in 2015 by the Ministry of Education. The NIRF always guided us in assessing and ranking HEI across the India, inspiring continuous reforms in our academic ecosystem. I take this opportunity to express my gratitude and deep appreciation to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, whose visionary leadership has elevated education as the cornerstone of nation building. His constant emphasis on Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Viswas, and Sabka Prayas is deeply reflected in our higher education reforms. As he stated at the G20 Education Minister meet in June 2023, I am quoting him, education is not only the foundation upon which our civilization has been built, but it is also the architect of humanity's future. This timeless thought guides our efforts in shaping India's higher education journey. In our country today, we are in this world, we are the one of the largest higher education ecosystem, comprising of 1,168 universities, more than 45,000 colleges, affiliated colleges, 12,000 standalone institutions supported by nearly 16 lakh teachers serving over 4.4 crore of students. While we have expanded across the access and inclusivity at the unprecedented scale, the next phase should be our journey must focus on the quality, innovation, and the global competitiveness. Our task is to ensure that higher education is not just accessible but world class, empowering every student with the skills and knowledge to thrive in this competitive globalized world. Our higher education system must not only meet the aspirations of individuals but also align with the national development goal. Excellence requires a holistic approach encompassing students, faculty, researchers, employability, inclusivity, and innovation. This holistic vision is at the heart of NEP 2020 and the Indian ranking framework. While some parameters of quality are measurable, others are complex and qualitative. The NIRF has successfully balanced these aspects, and the recent inclusion of SDG based ranking has further aligned our efforts with global societal priorities. India rankings now span multiple 9 categories and 8 domains. In addition to overall rankings, categories include universities, colleges, research institutions, state public university, open university, and skilled universities. Domain specific ranking cover engineering, management, pharmacy, architecture, and planning, medical, law, dental, agriculture, and allied sector. This year, a record, as mentioned by my earlier speaker, a record 14,163 institutions from 7,692 unique
higher education institution participated across 9 category and 8 subject domain, a remarkable testament to the framework growing credibility and use across the higher education ecosystem. Each year, parameters are refined to ensure the fairness, integrity, and relevance. Among the most important enhancements in this year is the introduction of SDG ranking that evaluate institutions on green practices and societal impact. The strengthening of research integrity through negative marking for retracted publication, greater emphasis on highly cited publication and Q1 journals, and equity parameters to ensure representation of women, diverse regions, and disadvantaged communities. These refinements make the system not just a ranking tool, but also a policy intervention mechanism guiding institutions towards meaningful self-improvement. Institutional strengthening has been supported by several flagship schemes of the ministry being implemented under the leadership of our Honorable Education Minister, Shri Dharmendra Pradhan ji, whose leadership has been instrumental in steering the critical reforms under the National Education Policy 2020 and fostering innovation and inclusivity in our higher education system. The Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan, RUSA, we renamed is as PM Usha now, has strengthened state universities through infrastructure, development, accreditation, and quality assurance. The recognition of select institution of eminence, that is IOEs, has conferred autonomy and fostered global collaboration, leading to improved ranking. The schemes like One Nation, One Subscription, GAN, that is Global Initiative for Academic Networks, and Smart India Hackathon have fostered quality teaching and innovation. NRF PAIR, that is Promoting Academic and Research Collaboration, has enabled monitoring of emerging institutions. Together, these initiatives have built an ecosystem that nurtures research, innovation, and excellence. As a result, our universities and institutions increasingly making their presence and globally. In this, the QS University ranking in 2026, 54 Indian institutions are featured, and a remarkable rise from just 11 in 2015, making India the fourth most representative country worldwide. In the Time Higher Education, that is THE, Impact Ranking 2024, India emerged as the best represented nation for contribution to the Sustainable Development Goals. This achievement reflects the progress of our university in aligning with the global benchmarks of excellence and societal responsibility. And I think this is not the enough. A Dil Maage Bor, in recent year, much more Indian institution will be featured in the global rankings such as QS as well as the Times one. The Indian ranking have installed a culture of accurate data collection, self-assessment among the higher education institution. This has facilitated wider participation in global rankings such as THE, QS, ARW, where the number of performance of Indian institutions have constantly improved. This momentum strengthens India's aspiration to be recognized as a global hub of knowledge and innovation. Friends, if I were to capture our aspiration in one word, it would be shine, S-H-I-N-E. S, where S stands for sustainability, the building the institution align with the SDGs and green practices. H stands for holistic growth, fostering access, inclusivity, and lifelong learning. I stands for innovation, driving research, entrepreneurship, and digital transformation. N stands for national pride, strengthening our identity as knowledge superpower. And the last E stands for excellence, benchmarking with the best globally and continuously striving higher.
Through Shine, we envision India not just as a participant, but as a global leader in education, shaping the knowledge economy of the future. As we celebrate a decade of NIRF, I would like to congratulate and best wishes. I would like to confer the best wishes to the participating institution, and I feel that this result will inspire them to do much better in the near future in the upcoming ranking. I also congratulate those will come may come second or third in this ranking. I will wish them best luck for the next time ranking, and I feel all together we can make a change in the Indian ecosystem, and we have already started our journey, and with the constant fight and constant improvement, we will rank much more in the global standard also. So I would like to congratulate once again those will be featured in the ranking, and best wishes for all of you. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much, sir, for your remarkable address. Your address would definitely inspire and encourage institutions of higher education to set new targets for themselves in India rankings. And now, ladies and gentlemen, the moment we've all been waiting for. We are truly honored to have amongst us the chief guest of today's ceremony, Honorable Union Minister of Education, Shri Dharmendra Pradhan ji. We now request our chief guest, Honorable Minister, to kindly release the India Rankings report for 2025. A round of applause, ladies and gentlemen, as we unveil the India Ranking report for 2025. Thank you, dignitaries, for doing the honors. We now request our chief guest, Honorable Minister, to kindly release India Rankings 2025 by pressing the remote button. Thank you so much, Honorable Minister, for unveiling the rankings. We now proceed with the announcement of India Rankings 2025 in different categories and subject domains. We will begin with the overall category. The first rank holder is Indian Institute of Technology, Madras, Indian Institute of Science, Bangalore at second, Indian Institute of Technology, Bombay at third, Indian Institute of Technology, Delhi at fourth, Indian Institute of Technology, Kanpur at fifth, Indian Institute of Technology, Kharagpur at sixth, Indian Institute of Technology, Roorkee at seventh, All India Institute of Medical Sciences, Delhi at eighth, Jawaharlal Nehru University, New Delhi at 9th, and Banaras Hindu University, Varanasi at 10th. We now move to our next category, which is universities. The first position holder is Indian Institute of Science, Bengaluru. Jawaharlal Nehru University, New Delhi stands at second. Manipal Academy for Higher Education, Manipal at third. Jamia Millia Islamia, New Delhi at fourth. University of Delhi, New Delhi at fifth. Banaras Hindu University, Varanasi at sixth. Birla Institute of Technology and Science, Pilani at seventh. Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore at eighth. Jadavpur University, Kolkata at 9th, and Aligarh Muslim University, Aligarh at 10th position. Marching ahead to our next category, which is engineering discipline. Indian Institute of Technology, Madras at rank 1, Indian Institute of Technology, Delhi at 2,
Indian Institute of Technology, Bombay at 3. Indian Institute of Technology, Kanpur at 4th position. Indian Institute of Technology, Kharagpur at 5th. Indian Institute of Technology, Roorkee at 6th. Indian Institute of Technology, Hyderabad at 7th. Indian Institute of Technology, Guwahati at 8th. National Institute of Technology, Tiruchirappalli at 9th. Indian Institute of Technology, Banaras Hindu University, Varanasi at 10th position. Up next, our next category is management discipline. The first rank holder is Indian Institute of Management, Ahmedabad. Indian Institute of Management, Bangalore at 2nd. Indian Institute of Management, Kozhikode at 3rd. Indian Institute of Technology, Delhi at 4th. Indian Institute of Management, Lucknow at 5th. Indian Institute of Management, Mumbai at 6th. Indian Institute of Management, Calcutta at 7th. Indian Institute of Management, Indore at 8th. Management Development Institute, Gurugram at 9th. XLRI Xavier School of Management, Jamshedpur at 10th position. Marching ahead to our next discipline, which is pharmacy. The first rank holder is Jamia Hamdard, New Delhi. Birla Institute of Technology and Science, Pilani at 2nd. Punjab University, Chandigarh at 3rd. JSS College of Pharmacy, Ooty at 4th. National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Hyderabad at 5th. Institute of Chemical Technology, Mumbai at 6th. JSS College of Pharmacy, Mysore at 7th. Manipal College of Pharmaceutical Sciences, Manipal at 8th. National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Mohali at 9th. SRM Institute of Science and Technology, Chennai at 10th position. Our next category is colleges. The first rank holder is Hindu College, Delhi. A lot of enthusiasm can be seen. Miranda House, Delhi at 2nd. Hansaraj College, Delhi at 3rd. Kirori Mal College, Delhi at 4th. St. Stephen's College, Delhi at 5th. Ramakrishna Mission Vivekanand Centenary College, Kolkata at 6th. Atma Ram Sanatan Dharm College, Delhi at 7th. St. Xavier's College, Kolkata at 8th. PSGR Krishnamal College for Women, Coimbatore at 9th. PSG College of Arts and Science, Coimbatore at 10th position. Up next is architecture and planning discipline. The first rank holder is Indian Institute of Technology, Roorkee. National Institute of Technology, Calicut at 2nd. Indian Institute of Technology, Kharagpur at 3rd. Indian Institute of Engineering, Science and Technology, Shibpur at 4th. Jamia Millia Islamia, New Delhi at 5th position. Our next discipline is law. The first rank holder is National Law School of India, University, Bangalore. National Law University, Delhi at 2nd. Nalsar University of Law, Hyderabad at 3rd. The West Bengal National University of Juridical Sciences, Kolkata at 4th. Gujarat National Law University, Gandhinagar at 5th position. Marching ahead to our next discipline, which is medical. The first rank holder is All India Institute of Medical Sciences, Delhi. Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh is at 2nd. Christian Medical College, Vellore at 3rd. Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry at 4th. Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, Lucknow at 5th position. Moving ahead to our next discipline, which is dental. The first rank holder is All India Institute of Medical Sciences, Delhi. Savitha Institute of Medical and Technical Sciences, Chennai at 2nd. Maulana Azad Institute of Dental Sciences, Delhi at 3rd. Dr. D.V. Patil Vidyapeeth, Pune at 4th. Manipal College of Dental Sciences, Manipal at 5th rank. Moving ahead to our next category, which is agriculture and allied sectors. The first rank holder is Indian Agricultural Research Institute, New Delhi. ICAR, National Dairy Research Institute, Karnal at 2nd. Punjab, Ludhiana at 3rd. Banaras Hindu University, Varanasi at 4th. Indian Veterinary Research Institute, Izzatnagar at 5th. Our next category is research. The first rank holder is All Indian Institute of Science, Bangalore.
Indian Institute of Technology Madras at second, Indian Institute of Technology Delhi at third, Indian Institute of Technology Bombay at fourth, Indian Institute of Technology Kharagpur at fifth position. Marching ahead to our next category, which is innovation. The first rank holder is Indian Institute of Technology Madras, Indian Institute of Technology Bombay at second, Indian Institute of Science at third, Indian Institute of Technology Kharagpur at fourth, Indian Institute of Technology Kanpur at fifth, Indian Institute of Technology Hyderabad at sixth, Indian Institute of Technology Delhi at seventh, Indian Institute of Technology Roorkee at eighth, Anna University at ninth position, Indian Institute of Technology Mandi at 10th position. Up next is State Public Universities category. The first rank holder is Jadavpur University, Kolkata, Anna University, Chennai at second, Punjab University, Chandigarh at third, Andhra University, Vishakhapatnam at fourth, Kerala University, Tiruvananthapuram at fifth, Cochin University of Science and Technology, Cochin at sixth, Osmania University, Hyderabad at seventh, University of Kashmir, Srinagar at eighth, Guwahati University, Guwahati at ninth, Bharat University, Coimbatore at 10th position. Moving ahead to our next category, which is open universities. The first rank holder is Indira Gandhi National Open University, New Delhi, Karnataka State Open University, Mysore at second, UP Rajshri Tandon Open University, Allahabad at third position. The next category is Skill Universities category. The first position is backed by Symbiosis Skills and Professional University, Pune, Symbiosis University of Applied Sciences, Indore at second, Shri Vishwakarma Skill University, Palwal at third. And the last category is, ladies and gentlemen, SDG institutions category. The first rank holder is Indian Institute of Technology, Madras, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi at second, Jamia Millia Islamia, New Delhi at third position. And we now proceed with the presentation of awards and certificates to the top ranked institutions in each category and subject domain. May I now request our chief guest, Shri Dharmendra Pradhan ji, along with other esteemed dignitaries, to kindly step forward for the presentation of awards. And for next few minutes, we would be requesting a lot of enthusiasm and applause from our respected educators. We shall begin with the first category, which is overall category, and the first rank holder is Indian Institute of Technology, Madras. We need a more energetic round of applause, ladies and gentlemen. The second rank holder in overall category is Indian Institute of Science, Bengaluru. Kindly keep the applause going for the second position holder, Indian Institute of Science, Bengaluru. The third rank holder in this category, which is overall, is Indian Institute of Technology, Bombay. We need a more energetic and a warm round of applause, ladies and gentlemen. Our next category is universities, and the first rank holder in universities category is Indian Institute of Science, Bengaluru. The second position holder in universities category is Jawaharlal Nehru University, New Delhi. The third position holder in universities category is Manipal Academy of Higher Education, Manipal.
Moving ahead to our next category, which is engineering discipline. And the first rank holder in engineering discipline is Indian Institute of Technology, Madras. Coming again on stage, Indian Institute of Technology, Madras. Can we give him a louder round of applause? The second rank holder is Indian Institute of Technology, Delhi in engineering discipline. Let's keep the energy going. The third position holder in this engineering discipline is Indian Institute of Technology, Bombay. IIT Bombay again on stage. Can we give him another round of applause? Our next discipline is management, and the first rank holder is Indian Institute of Management, Ahmedabad. The first rank holder in management discipline, Indian Institute of Management, Ahmedabad. The second rank holder in management discipline is Indian Institute of Management, Bangalore. The third rank holder in management discipline is Indian Institute of Management, Kozhikode. Let's all be a part of this celebration. It feels great, to receive this round of applause once you're on stage. So let's all congratulate the proud winners. Our next discipline is pharmacy, and the first rank holder is Jamia Hamdard, New Delhi. The second position in pharmacy discipline goes to Birla Institute of Technology and Science, Pilani. The third rank in pharmacy discipline goes to Punjab University, Chandigarh. And now we move to the next category, which is colleges. The first rank holder in the colleges category is Hindu College, Delhi. Kindly keep the applause going for Hindu College, Delhi in the colleges category. The second position holder in colleges category is Miranda House, Delhi. Please give it up for Miranda House, Delhi, second position holder. The third position holder in colleges category is Hansaraj College, Delhi. Please give it up for Hansaraj College, Delhi. We now move to our next discipline, which is architecture and planning discipline. And the first rank holder is Indian Institute of Technology, Roorkee. The first rank holder in architecture and planning discipline, IIT Roorkee, Indian Institute of Technology, Roorkee.
The second rank holder in this category is National Institute of Technology, Calicut. The second rank holder in Architecture and Planning discipline, National Institute of Technology, Calicut. The third rank holder is Indian Institute of Technology, Kharagpur. Indian Institute of Technology, Kharagpur. Up next is law discipline, and the first position holder is National Law School of India University, Bangalore. You know, they say that action speaks louder than words. The second rank holder in law discipline is National Law University, Delhi. Nalsar University of Law, Hyderabad is at third. Nalsar University of Law, Hyderabad. Up next is medical discipline, and the first rank holder is All India Institute of Medical Sciences, Delhi. Can we all cheer up for All India Institute of Medical Sciences, Delhi? The second position holder is Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh. Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh at second position. The third position goes to Christian Medical College, Vellore in medical discipline. Christian Medical College, Vellore. Up next is dental discipline, and the first rank holder is All India Institute of Medical Sciences, Delhi. Coming again on stage, All India Institute of Medical Sciences, Delhi. Can we give them a more louder and an energetic round of applause? Second rank holder, Savita Institute of Medical and Technical Sciences, Chennai. Let's all together congratulate Savita Institute of Medical and Technical Sciences, Chennai. At third position, we have Maulana Azad Institute of Dental Sciences, Delhi. Maulana Azad Institute of Dental Sciences, Delhi at third in dental discipline. Up next is agriculture and allied sectors. The first rank holder is Indian Agricultural Research Institute, New Delhi. The second rank holder is ICAR, National Dairy Research Institute, Karnal. The third rank holder is Punjab Agricultural University, Ludhiana.
The next category is research, and the first position holder is Indian Institute of Science, Bengaluru. The second position is backed by Indian Institute of Technology, Madras. The third position holder in research category is Indian Institute of Technology, Delhi. IIT Delhi on stage. Very few categories to go, so let's keep applauding, cheering, congratulating. Up next is innovation category, and the first rank holder is Indian Institute of Technology, Madras. Please put your hands together for Indian Institute of Technology, Madras, rank 1 in innovation. Rank 2 is Indian Institute of Technology, Bombay. IIT Bombay at second, and the third rank holder is Indian Institute of Science in innovation category. Indian Institute of Science at third. Up next is State Public Universities category, and the first rank holder is Jadavpur University, Kolkata at rank 1. Anna University, Chennai at rank 2. Anna University, Chennai at rank 2. And the third position holder is Punjab University, Chandigarh. Punjab University, Chandigarh. Our next category is Open Universities category. And there is one winner in this category, only the first position holder, which is Indira Gandhi National Open University, New Delhi. Indira Gandhi National Open University, New Delhi in Open Universities category. The second last category, ladies and gentlemen, is Skill Universities category. And the first position holder, Symbiosis Skills and Professional University, Pune. There is only first position in this category, which goes to Symbiosis Skills and Professional University, Pune in Skill Universities category. Can we all congratulate Symbiosis? And the last category, which is a new category, is SDG institutions category. The first rank holder is Indian Institute of Technology, Madras. Let's all once again congratulate IIT Madras. The second rank holder is Indian Agricultural Research Institute, New Delhi. And the third rank holder in SDG institutions category is Jamia Millia Islamia, New Delhi.
The third rank holder in SDG institutions category, which is a new category, is Jamia Millia Islamia, New Delhi. Please give it up for Jamia Millia Islamia. Ladies and gentlemen, with this we conclude the award ceremony. We thank the dignitaries for doing the honors. Can we once again congratulate all the awardees for their exemplary performance and contribution to higher education. Once again, many, many congratulations. And now, ladies and gentlemen, it is indeed my proud privilege and honor to invite on the dais our chief guest for today's ceremony, a visionary leader who's been at forefront of transforming India's education ecosystem. Under his dynamic leadership, India has been witnessing path-breaking reforms in the higher education sector, be it through the implementation of the National Education Policy 2020, the push for skill-based and multidisciplinary learning, or the emphasis on making Indian institutions globally competitive. Sir, your guidance continues to inspire not just institutions, but also millions of students and educators across the nation. May I now humbly request Honorable Union Minister of Education, Shri Dharmendra Pradhan ji, to kindly address the gathering. Can we welcome him with a huge round of applause, ladies and gentlemen? नमस्कार। NIRF की 10th एडिशन की इस समारोह में मंच पे उपस्थित मेरे मित्र डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी श्री विनीत जोशी जी, AICT के चेयरमैन प्रोफेसर TG सीताराम जी, NBA, NAC और NETF के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे जी, NBA के मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर अनिल कुमार नासा जी और यहाँ उपस्थित देश भर से आए हुए विशिष्ट शिक्षाविद, शिक्षा परिवार की सभी प्रमुख सदस्यगण, अन्य साथीगण और मीडिया के साथीगण, ये 10th एडिशन की रैंकिंग का आज फॉर्मल अनाउंसमेंट हुआ। ये धीरे धीरे हमारी नेशनल बेंचमार्क बनाते जा रहा है। भारत में जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ये सभी अभी रैंकिंग में आना शुरू किए हैं। बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस इसमें पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं और हमारी अपेक्षा है आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों के साथ एग्रीकल्चर, हेल्थ, ये सारे विभागों की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये सारे इस फ्रेमवर्क में धीरे धीरे आए। हमारी देश में हमारी खुद की रैंकिंग फ्रेमवर्क बने, इसी उद्देश्य से पिछले 2015 में इसकी कल्पना की गई। 2016 से उसकी पहला मानक तय किया गया, पहला घोषणा की गई और आज धीरे धीरे, पहले शायद पिछले साल तक तो 16 कैटेगरी का था, इस साल ये 17 कैटेगरी में हुआ है और आने वाले दिनों में और भी कैटेगरी बने, ये भी हमारा शुभेच्छा है। और आज जिन पार्टिसिपेंट्स को, जिन्होंने NIRF की रैंकिंग में पार्टिसिपेट किए, मैं उन सबको शुभेच्छा देता हूं और जिनको आज उस रैंकिंग प्रोसेस में रिकॉग्निशन मिली, उनको भी हम आज बधाई देते हैं उनकी इस सफल प्रयास के लिए। हम सभी के प्रयासों के कारण हमारी जो लक्ष्य है, आने वाले 22 साल में विकसित भारत की लक्ष्य की ओर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमारी देश की रैंकिंग फ्रेमवर्क उसमें एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूटर के रूप में काम करेगा। मैं इसके लिए आज आप सबको बधाई देता हूं। मित्रों, हमारे देश में हायर एजुकेशन में 2014-15 में लगभग 3.5 करोड़ से कम स्टूडेंट थे।
जो बढ़ के आज लगभग 4.5 करोड़ हो गए हैं। और इसकी लक्ष्य आने वाले 2030 तक हमारी GR 50% हो। अगर हम 50% को एब्सोल्यूट नंबर में कन्वर्ट करते हैं, जो आज 4.45 या 46 करोड़ हो रहा है, ये लगभग 9 करोड़ होगा। माने हमें आने वाले 5 साल में डबल जंप करनी है, नंबर की दृष्टि से, केवल नंबर नहीं, उसकी क्वालिटी की दृष्टि से। NEP ने उसके लिए कई सारा विषय को पाथवे करके हमारे सामने रखा है, और उसमें एक पाथवे है हमारी इंस्टीट्यूशंस की एक्रीडेशन बढ़ाना, हमारी इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग बढ़ाना, हमारी इंस्टीट्यूशंस की प्रोग्राम की एक्रीडेशन करना, इंस्टीट्यूशंस की एक्रीडेशन करना। मैं पिछले 4 साल से शिक्षा विभाग से जुड़ा हूं। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन में हमें कुछ इंस्टीट्यूशंस हमारी ग्लोबली भी रिकॉग्नाइज्ड हैं। हमारी IITs की, अभी IIT काउंसिल की एक मीटिंग में हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन देखा। IITs की पिछले एक लंबे समय की डाटा को एनालिसिस करते हुए हमने ये पा रहा है, थोड़ा और डाटा ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता भी है। सभी IIT की नहीं, कुछ IITs के, पुराने IITs के हैं, उसकी ट्रेंड ध्यान में आता है। हमारी IIT के लगभग 30% स्टूडेंट बाहर है, बाकी जो 70% स्टूडेंट भी अंदर है। किसी ने कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है, उसका डाटा कैलकुलेशन करना कोई सहज नहीं है। हमारी शिव रघुनाथन जी बैठे हैं पर्डू यूनिवर्सिटी में, हमारी IITian है, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। ये 30% कैटेगरी में आएंगे। और बाकी जो 7-8 IIT में पहले देख रहा था, और बाकी जो हमारा 23 IIT है, हमारे NIT भी कोई कम नहीं है, हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज भी कोई कम नहीं। मेरा IIT को उसको रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप मानूं, उसमें जो 670% बाकी भारत में है, उनमें से अनेक लोग भी एक प्रकार से फॉरेन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। GCC में काम करते हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। भारत की इकोनॉमी में उनकी भूमिका है, लेकिन भारत की सामान्य लोगों की आवश्यकता में इनकी भूमिका क्या है, एक बार कभी सोचने के लिए प्रश्न होनी चाहिए। मेरे को लगा मैं आपको कैंडिडेटली आपके सामने, मैं IIT सबसे संभ्रांत इंस्टीट्यूशन है, सबसे अच्छी इंस्टीट्यूशन है हमारी। उसमें पढ़ाने वाले लोग, पढ़ने वाले लोग और उसकी लर्निंग आउटकम, सारे मामले में आज ग्लोबल बेंचमार्क हुई है। भारत की IIT आज दुनिया में ब्रांड बनी है। इसके लिए जब हम अभी देखते हैं कि हमारी QS रैंकिंग में 2014 में हम 500, पहला 500 की कैटेगरी में, हमने अभी जो फॉरेन यूनिवर्सिटी को अनुमति दिया, हमने 500 कैटेगरी, QS 500 कैटेगरी को बेंचमार्क बनाई है। हम अगर खुद को उसमें से परखते हैं, तब हमारी 2014 में 11 इंस्टीट्यूशन थे, जो आज बढ़ के लगभग 46 इंस्टीट्यूशंस 2054 अभी तक 54 हमारी हो चुके हैं। हमारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में भी 2019 में 2019 में हमारा नंबर 49 था, जो अभी बढ़ के 2025 में 113 हुआ है। हमारी IIM और बिजनेस स्कूल भी कुछ कम काम नहीं कर रहे हैं। हमारी 6 IIM और 2 अलग मैनेजमेंट बी स्कूल हमारी फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल MBA रैंकिंग में पहला 100 के अंदर, यानी 8 इंस्टीट्यूशन हमारी पहला 100 के अंदर है। ये सब हमारी एक इंडिकेटर है। लेकिन हमारी और भी एक इंडिकेटर है, हमारी देश में लगभग 50,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। उस 50,000 में भले ही अनिल जी को और नासा जी को लग रहा होगा हमारा क्वांटम जंप हुई है, हमारी 14,000 एप्लीकेशन आए हैं, यूनिक इंस्टीट्यूशंस 7,000 आए हैं। ये तो हमारे IIT मद्रास 5 ले लिया उनमें से।
आपके सॉफ्टवेयर तो आईआईटी मद्रास मैनेज नहीं कर रहा है। ऐसे हमारा मद्रास आईआईटी अच्छा आईआईटी है, अच्छा करें, हमारा अनेक अनेक शुभेच्छा है। लेकिन मेरा जो मूल प्रश्न है एक्रीडेशन के बारे में मैं अभी यहाँ उल्लेख नहीं करूंगा, ये आज रैंकिंग की बात हो रही है। हमारे देश में रैंकिंग एक्रीडेशन इसकी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, और हमारी ये जो रैंकिंग आज हो रहा है और एक्रीडेशन में तो थोड़ा डाटा पॉइंट्स के ऊपर होता है, उनमें से भी हम धीरे धीरे मैच्योरिटी हमारी बढ़ रही है। हम खूब शीघ्र नया एक्रीडेशन मैकेनिज्म आपके सामने रखेंगे। उसमें कई प्रकार की पब्लिक कंसल्टेंसी के कारण, स्टेक होल्डर कंसल्टेंसी के कारण उस पर कई सुझाव आते रह रहा है, उसको आते जा रहे, तो उसको अकोमोडेट करने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँ एक्रीडेशन की एनालिसिस करने में थोड़ा डाटा पॉइंट है। हमारी अपेक्षा है कि हम देश में वन डाटा वन नेशन की थ्योरी में जाएंगे। डाटा क्या क्या रहनी चाहिए, आप ओपन टू आइडिया है, मैं सबको प्रश्न भी पूछता हूँ, सबको सुझाव भी मांगता हूँ। विनीत जी उस काम पे व्यक्तिगत रुचि लेके काम कर रहे हैं। हम जल्द ही उस पोर्टल को, प्लेटफॉर्म को लोगों के सामने, आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन उसमें से क्या मैं विनीत जी आपसे ये अपेक्षा रखूंगा, प्रारंभिक दिनों में आप उसको संशोधन करने की मानसिकता पे रखोगे। सरकार में एक दिक्कत क्या होती है, जब एक बार घोषणा हो जाती है, कमा हो जाती है गलती से, तो 6 साल रहेगा। 7वां साल में एक बार एक एक्सपर्ट कमेटी बैठेगी, फिर उसमें से 28 मीटिंग होगी, फिर उसके बाद रिकमेंडेशन होगा, फिर विभाग में उसको समीक्षा किया जाएगा, फिर उसके बाद रखा जाएगा। इसीलिए मैं आपको इस पर थोड़ा, हमें एकेडमिक्स को ऑटोनॉमी देना है, हमको ओपन माइंड पे काम करना पड़ेगा। आप डाटा की पोर्टल खूब शीघ्र पब्लिक डोमेन में रखो, सुझाव उनसे एक्सपेक्ट करो, और फिर एक समय में और 3-4 महीने के बाद हम उसको लॉक करें। कम से कम मैं अगले एकेडमिक ईयर्स तक, मैंने आज हम सितंबर की फर्स्ट वीक में है, हम लोग उसको प्रिलिमिनरी फॉर्मेट हम आने वाले दिसंबर की पहले उसको रखें, आगे फिर 2-3 महीने में उसको संशोधन करके फरवरी तक उसको फाइनल रखें। तो 1 महीने के अंदर हम कोशिश करें देश की एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस अपने डाटा, ऐसे आपके हायर एजुकेशन की जो स्टूडेंट टीचर आईएस पोर्टल है, इस आईसे पोर्टल है, आईसे पोर्टल का ये थोड़ा और एलाबोरेटिव और थोड़ा व्यापक होगी। हमारी इच्छा है और हमारी सुझाव रहेगा कि एनबीए हो, नैक हो या एनआईआरएफ हो या अन्य कुछ अनुमति के लिए, यूजीसी कई सारा विषय में हमारी यूनिवर्सिटियों को स्वतंत्रता देने के लिए कहा है, और हम हायर एजुकेशन कमीशन की जब पूरा प्रारूप फाइनलिटी की ओर हम बढ़ रहे हैं, उस समय में हम और स्वतंत्रता देंगे। लेकिन उसमें एक शर्त लगेगी, उसमें से डाटा ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए, डाटा अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए। इसीलिए डाटा का पोर्टल पहले बने, उसके लिए मैं आपको अपेक्षा रखता हूं आपसे। अभी हम लोग एनआईआरएफ में, जब मैं एनआईआरएफ में देखता हूं, मैं भी 2-3 साल से आ रहा हूं, जिनको प्राइज मिलता है, जिनको रिकॉग्निशन होता है, वही लोग आते हैं। जिनको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाते, वो कल परसों मेरे को मेल लिखेंगे, नहीं तो फिर कभी मिलेंगे तो थोड़ा पहले 10-15 मिनट नाराजगी दिखाएंगे, फिर कहेंगे कि एनआईआरएफ की ये 4 चीज छूट गया था। फिर मैं सचिव महोदय को या एनआईआरएफ की अथॉरिटी को, अनिल जी जैसे मित्रों को कहूंगा कि भाई देखो ये 2-3 छूटे, ये थोड़ा एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस में है। अभी भी हम लोगों के पास उसकी कोई डाटा पॉइंट पे हम एनालिसिस नहीं करते हैं, हमारी अभी परसेप्शन ही पे ही है। एनआईआरएफ को मैं एक आत्मसमीक्षा के लिए सुझाव देता हूं, अभी भी हमारी डाटा एनालिटिक्स के ऊपर नहीं है, हमारी ये परसेप्शन पे है। हमारी, देखो जिनको नहीं मिला इनसे, जो पहाड़ी जी को नहीं मिला इस बार, त्रिची को मिल गया, इसीलिए पहाड़ी जी जोर से कहा हाँ ठीक बात है। ऐसे मनुष्य की स्वभाव है, जो बात मन को आता है वही ठीक लगता है, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन मैं भी इसको सहमत हूं, इसको धीरे धीरे देखो, हमको डाटा ड्रिवन करना पड़ेगा। डाटा में भी विचित्रता है,
हमारी नैक में एक बार हमारे ड्यू के वीसी शायद वो कहीं किसी में 1 नंबर नहीं हुई, इसलिए आए ही नहीं हो, तो उनके कॉलेज को भेज दिया, कॉलेज सब 1 नंबर हुए ड्यू के। एक बार वीसी हमको कहे ड्यू के, साहब देखो मैं नैक में A+ हूँ या A हूँ, A+ हूँ, लेकिन कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी A++ है, क्योंकि मेरे जो डाटा है, मैं सरकारी संस्था हूं, मेरे स्कॉलरशिप, मेरा फीस स्ट्रक्चर, अभी नैक ने एक रखा है भाई, फीस स्ट्रक्चर के ऊपर आपका एक वेटेज है। सरकारी इंस्टीट्यूशंस में फीस स्ट्रक्चर तो सरकार की जिम्मेदारी है, कि हमारे देश की व्यवस्था, वेलफेयर स्टेट में हमने सरकार की स्पॉन्सरशिप में बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन नैक की, कभी मैंने पूछा था ये एनबीए क्या है, मैं नया नया मंत्री में अभी पूछूंगा तो आप मेरे ऊपर भी हंस दोगे। मैं नया नया मंत्री, एनबीए क्या, मैंने एनबीए की बैकग्राउंड वजह की, वाशिंगटन अकॉर्ड से हमको एनबीए करना पड़ता है। कभी सोचना चाहिए हम उस जाल में फंसना चाहिए कि नहीं फंसना चाहिए। क्या हम भारत के एनआईआरएफ को मजबूत नहीं कर सकते हैं क्या? आज भारत के पास हमने तय किया हम डिजिटल दुनिया बनाएंगे। हम डिजिटल दुनिया में, आज दुनिया की 50% स्पेस हमारे पास है। भारत के पास जितना डीपीआई है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपने बनाई है, बनाने वाले सब आप हो। कभी कभी हमारी देश की वैज्ञानिक उपलब्धि जब होती है, उस उपलब्धि के पीछे आप ही रहते हो, लेकिन आप फोटो के पीछे 3-4 लाइन के पीछे खड़े हो जाते हो। जो लोग आपको पैसा देते हैं आपको बनाने के लिए आगे आ जाते हैं। हमारी शिक्षा समूह की एक मर्यादा है, कोई भी चीज नवाचार में हमारी भूमिका है, लेकिन उसको कैसे व्यवस्थित उपस्थापित करना, प्रेजेंटेशन करना, इसमें हमारी एक गैप है। हमारी एनआईआरएफ की मान्यता क्यों ऊपर नहीं, उसको क्यों हम एक्सेप्टेबल नहीं बनाएंगे? पिछले 10 साल से हमने सफलता के साथ सक्सेसफुली उसको एस्टेब्लिश किया है, फिर भी हमारी इंस्टीट्यूशंस की अराउंड 50,000 से 7,000 तक हम आए हैं लगभग, और हम 15-17% या 20% तक पहुंचे हैं। हमें और इंस्टीट्यूशंस को उसमें अनबोर्ड करना है। उसके लिए आपको एनआईआरएफ हो या आपकी नैक की एक्रेडिटेशन हो या एनबीए की एक्रेडिटेशन हो, उसकी पद्धति को बदलना पड़ेगा। फी स्ट्रक्चर अच्छा है, इसीलिए फी बेस प्राइवेट यूनिवर्सिटी की वेटेज ज्यादा होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेटेज कम होगा। ये ऐसे चीजों को अगर मैं अभी भी एनआईआरएफ की एक असेसमेंट इवैल्यूएशन को देखता हूं, आपने जो टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्स, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन, ये परसेप्शन बहुत बड़ा चीज होता है। परसेप्शन बहुत बड़ा चीज होता है। ये सारे 5 बिंदु आपकी है। मैं उसकी सब पॉइंट ढूंढ रहा था। सब पॉइंट में मैं एक चीज जो आज आवश्यकता है, जो हमारे बच्चों ने पिछले 10 साल में, आप ही ने उनको मौका दिया, आप ही की वहां से, इसमें किसी में नहीं है कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप किसने किया, कौन सी इंस्टीट्यूशन ने एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाया, उसकी कोई वेटेज है आपकी असेसमेंट में नहीं है, प्लेसमेंट में है। हमारी एंटरप्रेन्योरशिप ने, आपने यूनिकॉर्न बना है। आपने स्टार्टअप, हमारे देश में 2014 की पहले हाथ की गिनती में स्टार्टअप होते थे, आज आपने 1,50,000 स्टार्टअप सक्सेसफुली चला रहे हैं। आप ही के इंस्टीट्यूशन में जब जाता हूं, आपके इंक्यूबेशन सेंटर्स को देखता हूं, मेरे को बहुत ही आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन इस परफॉर्मेंस को आपने परसेप्शन की बहुत बड़े बास्केट के अंदर छोटा सा रखा है। हमें खुद एक बार उसको रिविजिट करने की आवश्यकता है। मित्रों, देश आज एक लंबी छलांग की कगार पे, हम वेयर इन द फुट हिल ऑफ द बिग माउंटेन क्लाइंबिंग, बहुत बड़ा छलांग लगाने की हमारे पास संभावना है। और देश की, विश्व की जिस प्रकार की परिस्थिति है, भारत की जो पोजीशन है,
और विकसित भारत की लक्ष्य है, इस आज की पोजीशन और आगे की 25 साल की लक्ष्य में। मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं उसकी उत्तर इसी हॉल के अंदर है। हमें इसकी रास्ता ढूंढनी पड़ेगी। देश में मैन्युफैक्चरिंग मिशन बनी है, देश में सेमीकॉन की मिशन बनी है, देश में एआई की मिशन बनी है, देश में बायोसाइंस की मिशन बनी है। कम से कम नेशनल मिशन अच्छे खासे हमारे देश के सामने है। हमारी नेशनल प्रायोरिटी तय है। हमारी देश में दुनिया की कोई बड़े कंपनी नहीं है दुनिया की जो भारत के अंदर नहीं है। 2 कारण से है। उनको यहाँ की नॉलेज को टैप करना है, उनको इस बाजार की एक्सेसिबिलिटी चाहिए, एक्सेस चाहिए। और कल तो जीएसटी आई है, थोड़ा और अच्छा होगा। जीएसटी में बहुत सारे मिडिल क्लास सेंट्रिक अनाउंसमेंट हुई है, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। सारे 20 स्कूल के लिए केस स्टडी भी हो जाएगी कि एक पॉलिसी में अगले 2-3 साल में इसकी सर्कुलर इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट आएगा। और बच्चों घरों के अंदर जब थोड़ा सहूलियत होती है, पहला किसी में खर्चा होता है तो एजुकेशन में खर्चा होता है। भारत में लंबी दूरी तय करना है। भारत में अभी किसी ने मेरे को एक पेपर के माध्यम से लिखा है कि हमारी दुनिया की डेवलप्ड इकोनॉमी की नागरिकों की डेस्कटॉप एक्सेसिबिलिटी लगभग 90% है। हमारी देश में डेस्कटॉप एक्सेसिबिलिटी 20% है। 20% में हम डिजिटल इकोनॉमी में दुनिया के आधे हो चुके हैं। ये फोन को छोड़ दीजिए, फोन तो ज्यादातर ट्रांजैक्शन के लिए, अभी प्रोडक्ट बातचीत करना, डाटा को एक्सचेंज करना, सब्सटेंटिव चीज में मानता हूं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में फोन हमारे काम पे आता है, लेकिन रियल टाइम पढ़ना, लिखना, प्रेजेंटेशन करना, उसको इंटरेक्टिव और करना, इसलिए हमको डेस्कटॉप चाहिए। हमारे देश में डेस्कटॉप की क्वालिटी बनाना, उसकी हमारा डिमांड बढ़ेगा तो बनाने वाले भी कम मूल्य में बनाएंगे। ये सारा विषय की चुनौती हमारे सामने है। आज हमारे देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके बहुत दुनिया की समाज नीति, राजनीति, अर्थनीति से ही चलती है। कौन किसको मदद करता है, कौन किसके साथ खड़ा होता है, इसकी मूल शर्त है देश की अर्थनीति। हम भारत की इन दिनों में जो अनुभव आया, अभी तक भी जो अनुभव आया, उसमें एक बात प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्टता के साथ कही है 15 अगस्त में कि हमें हमारे देश को आत्मनिर्भर बनानी है। 100 साल पहले हम स्वराज्य के लिए लड़े थे, अभी समृद्धि के लिए काम करना पड़ेगा। ये समृद्धि के ज्ञान शिक्षण संस्थान में है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में है। क्या हम कितने दिन ये कहेंगे कि भारत की नॉलेज पावर ग्लोबल इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है। भारत से मैं बहुत वेस्टर्न वर्ल्ड के उदाहरण नहीं देना चाहता हूं। भारत की ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में 50 साल पहले पढ़ाई लिखाई की स्तर भारत से ही खराब था, मॉडर्न इंडिया के साथ। मैं बहुत एंशिएंट इंडिया की बात नहीं कहता हूं, हम दोनों कॉलोनी में थे। कॉलोनी वाले वहां देश को बना ही लिए, हम तो स्वतंत्रता हमको मिली। लेकिन जब इकोनॉमिक ग्लोब ओपन अप हुआ 1990s में, पिछले 30-35 साल पहले, ऑस्ट्रेलिया ने खुद की स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने जो 2-3 चीजों को अपना इकोनॉमी की ड्राइविंग पॉइंट पर रखा, ड्राइवर बनाया, उसमें एक मिनरल रिसोर्स था, दूसरा एजुकेशन था। उन्होंने पिछले 30 साल में अपने इंस्टीट्यूशंस को ग्लोबल रैंकिंग में ऊपर लिया। भारत से मिला के 6 लाख स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की पढ़ रहे हैं। भारत दुनिया की विभिन्न देशों में लगभग 15 लाख विद्यार्थियों को भेज रहा है पढ़ने के लिए। भारत में
कुल मिला के 1 लाख के अंदर विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। ये हमारे लिए सोचने के लिए आते हैं। तो योगा पढ़ने आते हैं, आते हैं तो इंडिक नॉलेज के बारे में पढ़ने आते हैं। हमारे मन में बड़ा अभिमान है। हम मैथमेटिक्स में हम अभी एआई के पीछे आगे क्या है, एआई के आगे क्या है, एआई कहां तक जाएगा। एआई फिजिकल साइंस तक जाएगा और उसमें मैथमेटिक्स की एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। मेरे को दुनिया की बाहर के जितने विद्वानों को मैं पिछले 4 साल से मिला हूं और उसके पहले भी मिला हूं, सबकी एक भारत की स्ट्रेंथ एनालिसिस करते करते मैं जितना ग्लोबल थिंक टैंक को बात किया हूं, आप मेरे को बताओ भारत की स्ट्रेंथ क्या है। सबने कहा ओवरऑल कि भारत की नॉलेज पूल, टैलेंट पूल, भारत की शिक्षा उसकी स्ट्रेंथ है। लेकिन और गहराई से मेरे को पूछने से उत्तर मिला है भारत की मैथमेटिकल कैपेसिटी स्ट्रेंथ है। क्या हमारे पास दुनिया की बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ने आते हैं क्या? अगर हम दुनिया की 8-9% की ग्रोथ में काम करने वाली इकोनॉमी है, हमारे देश में हर एक साल लगभग केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र को मिला के 30 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दुनिया में कोई भी कमोडिटी कहां भी बनती है उसकी डेस्टिनेशन भारत है। क्या उनकी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हमारे 20 स्कूल में इंडियन मार्केट पढ़ने के लिए आते हैं क्या? क्या आप आपकी ऑनलाइन कोर्स में उनको कुछ कोर्स ऑफर कर रहे हो क्या? क्या भारत में इंस्टीट्यूशंस ना केवल इंग्लिश, हमारी चाइना के साथ ट्रेड डील लगभग 50 बिलियन है। क्या चाइनीज एग्जीक्यूटिव के लिए मेरे यहां का 20 स्कूल कोई डिप्लोमा कोर्स ऑफर कर पा रहे हैं क्या? क्या उसके कारण मेरा इंटरनेशनलाइजेशन बढ़ रहा है क्या? हमें एक समय आई है, ठीक है, हमने अपना एक व्यवस्था जमाई है, हमारे प्रायोरिटी हमारे देश के बच्चे हैं, लेकिन हमारी दुनिया की ब्रांड बननी है तो हमें इस प्रकार की नए चीजों को, एक समय में सही था हमारी रिसर्च की प्रायोरिटी साइटेशन था, पेपर था, अभी प्रोडक्ट आ चुका है। कभी हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत रुचि नहीं लेते थे। इंडस्ट्री को हम लोग मानते तो हम तो विद्या वाले हैं, हम व्यवसाय नहीं करते हैं। मित्रों, अभी समय आया है उसकी दृष्टिकोण को परिवर्तन करने के लिए। पिछले 10 साल में हमने इनोवेशन पहले भी था, लेकिन इनोवेशन को हमने एक विषय बनाई है। हमारे इंस्टीट्यूशंस मूलतः टीचिंग यूनिवर्सिटीज हैं। हमने अच्छा खासा रिसर्च भी किया है। क्या हमारी कल्चर में हम इनोवेशन को जोड़ के हम प्रोडक्टाइज कर पाएंगे? हमारे बच्चे हैंड्स ऑन पढ़ाई करेंगे। मैंने बहुत सारे आईआईटीएन है, मैं आपको क्षमा पहले मांग लेता हूं। हाँ, मैं जो कह रहा हूं मेरे को हमारे मित्र विनीत जोशी ने कहा है, मैं उनको कोट करता हूं, वो आईआईटीएन है। उन्होंने कहा साहब मैं कब पढ़े थे आप जोशी जी? 30 साल पहले या 40 साल पहले आईआईटी में कब थे? तो 40 साल हो गया। उन्होंने 40 साल पहले आईआईटी में जो पढ़ा था अभी भी वही पढ़ाया जा रहा है। तब भी थियोरेटिकल था, अभी भी थियोरेटिकल है। उन बच्चों की कोई गुनाह नहीं है। ये मेरे मित्र अब यहाँ पहुंचे हैं पर्डू में। जब उनको कुछ दिन पहले उनकी प्रेसिडेंट को उन्होंने लेके आए थे, उन्होंने कहा कि वी हैव ए इन्वेस्टमेंट ऑफ $4 बिलियन। मैं थोड़ा मेरे पास बैठे हुए किसी को पूछा क्या कहा, थोड़ा ठीक से अमेरिकन एक्सेंट में शायद समझा नहीं होगा, थोड़ा बताओ तो उन्होंने कहा उन्होंने अपने कैंपस में $4 बिलियन की यूनिवर्सिटी के इंडस्ट्री लगाई है। आप तो दूसरे इंस्टीट्यूशन को 1 इंच की लैंड भी देने के शेयर करने के लिए मूड में नहीं हो। हमारे राव साहब कहा, मैं दिख रहा था राव साहब को, राव साहब के पास 1000 एकड़ की जमीन है। फिर जमीन बाद में इंक्रोच हो गया, कोई ले लिया, वो आके हमको रोते हैं सर हमारा जमीन ले लिया। इंडस्ट्री लगाई आईटी की, क्यों वहां पार्क नहीं बनेगा?
फार्मास्यूटिकल की रिसर्च लैब क्यों नहीं बनेगा हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में? हमें नया मॉडल सोचना, देखेंगे कौन हमको विरोध करता है, क्या होता है देखेंगे। उसके बाद हम अपने यूटिलिटी कैसे बढ़ाएंगे, हमारी इंडस्ट्री कनेक्ट कैसे बढ़ेगी, हमारी नेशनल प्रायोरिटी में हमारी बच्चों को, ऐसे नहीं है बच्चों के पास असंभव क्षमता है। मैं 15 अगस्त की बाद में कहा चलो चलेगा आईआईटी घूम के, हम 17 अगस्त को गए थे विनीत जी के साथ आईआईटी दिल्ली में। 41 स्टूडेंट से 2.5 घंटा बात किया। मैं मित्रों में कभी कभी आपके पास दिखा हूं, आपके पास जब कभी आया हूं तो थोड़ा थोड़ा देखा हूं आपकी कैपेसिटी को, लेकिन मैं आप सबको अनुरोध करूंगा, हमारी बच्चों को भरोसा करना पड़ेगा। बच्चों को मैंने कभी कहा था कि कब कोई एक प्रोग्राम मैंने इन दिनों में कहा कि अटेंडेंस क्यों जरूरी है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप अटेंडेंस क्यों लेते हो? भाई इतना जेई वगैरह परीक्षा दे के आया, कॉलेज में आ गया है, ऐसे मंजू जी आपके वहां कोई अटेंडेंस के मायने है क्या? कोई मायने ही नहीं है। हमारी बच्चों को कैसे हम एक नया कल्चर बनाएंगे? अटेंडेंस लेना ही चाहिए, एक डिसिप्लिन इंस्टीट्यूट में करवानी पड़ेगी, लेकिन हमें कुछ नया नया पद्धति, हम जिस ये जो कम्युनिटी हम बैठा है ना, ये कम्युनिटी की दायित्व केवल अपने इंस्टीट्यूशंस के साथ नहीं है, इस कम्युनिटी की दायित्व हमारे देश की भविष्य के साथ जुड़ी हुई है। हमारे राज्यों जहां से हम आते हैं उन राज्यों की भविष्यता हमसे जुड़ी हुई है। मैं एक दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, सारे मैं आने वाले दिनों में कभी विनीत जी और अनिल जी थोड़ा कर पाओगे, देखो ये सब आईआईटी इतने सब प्राइज ले जाते हैं, मेरे शुभेच्छा है, लेकिन थोड़ा आईआईटी को पूछो कितना कंसल्टेंसी उस राज्य से लेके आया, उस राज्य की जो पीडब्ल्यू के काम होते हैं, रेलवे के काम होते हैं, उस राज्य के जो प्रोजेक्ट्स लगते हैं, उस डिपार्टमेंट, उस आईआईटी की सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कितने उन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को लेके आते हैं। बच्चा वहीं से पढ़ के, उसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ के बिग 4 में काम करेगा, कोई कंसल्टेंसी से काम करेगा, वो जाके फिर उस राज्य की सरकार से काम लेके पैसा कमाएगा। आप क्यों नहीं करोगे? ये क्यों स्टार्टअप नहीं बनेगा? आपके पास आईआईटी, एनआईटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, रेपुटेड कॉलेज की बैच है, आप जाओगे तो आपको कोई कंसल्टेंट नहीं मानेगा, आपको पहले बुलाएगा, और सेक्रेटरी आपका पुराना छात्र होगा तो आपको और प्रेम करेगा। आपके वहां क्यों पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, अगर मैं आगे की एक बात कहूं, आपके जो इनोवेशन पार्क है सबके पास है, क्या उस इनोवेशन पार्क की सीईओ मार्केट से है क्या? क्या उसकी तनख्वाह डायरेक्टर की बराबर की है क्या? डायरेक्टर महोदय को वो उस बारे में सोचना ही पड़ेगा। अभी तो हमारे कॉलेजेस रेस अमंग अनइक्वल्स में आप फास्ट हो, मैं अनइक्वल्स कहता हूं। ड्यू की जितनी ट्रस्ट है, ट्रस्ट फैक्टर आपके साथ जुड़ा है, ब्रांड वैल्यू आपके साथ जुड़ा है, वो तो फाइनली तो परसेप्शन ही होता है, कौन सा इवैल्यूएशन पे होता है। हमें इस सारा विषय को रेगुलेटरी में नहीं होगा, इसकी एक नया इन्विजनिंग करना पड़ेगा। नया एजुकेशन कल्चर कैसे बदलेंगे? हमें विकसित भारत के लक्ष्य को आगे ले जाना है, हम अपने नेशनल प्रायोरिटी के आधार पे ही काम करना पड़ेगा। हमारी देश की 30-35 लाख कैपिटल इन्वेस्टमेंट और उसकी मेंटेनेंस और उसकी सर्विस इंडस्ट्री आज चाइना को कोई हिला नहीं पाते, इसीलिए कि उसकी दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है। क्यों ना भारत दुनिया की सर्विस बैकएंड ऑफिस बनेगी, बाय डिफॉल्ट अभी बना है, लेकिन हम इतनी कैसे ऐसे इस प्रकार के दुनिया बनाए। हमें सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे क्यों पोस्ट डॉक के लिए बाहर जाते हैं, उस फैसिलिटी को हम यहां कैसे डेवलप करेंगे, इंडस्ट्री से बात करेंगे, इंडस्ट्री चेयर बनाएंगे। कम से कम हम इस साल 100 बच्चे, आगे चल के ये रैंकिंग में ऐसे होनी चाहिए कितने इंडस्ट्री पोस्ट डॉक हमने लाया, हमारे इंस्टीट्यूट कितने इंडस्ट्री पोस्ट डॉक लाया, और कितने मेमटेक स्टूडेंट या पीएचडी स्टूडेंट पोस्ट डॉक करने गए तो उनको माइनस मार्किंग कर दो। यही रंगराजन सबको समझा बुझा के ही रख देंगे।
माइनस मार्किंग करना शुरू करो भाई, कोई बाहर नहीं जाएगा। जा सकता है, जाएगा तो उसको कुछ होगा कि उस इंस्टीट्यूट को, बच्चा तो जाएगा, उस इंस्टीट्यूट को थोड़ा वेटेज मिल कम हो जाएगा। ये जो फ्रंट में बैठे सब लोगों में जानता हूं, आप सबकी कैपेसिटी है, सबको आप कन्विंस करके, वो बच्चा आपके अंदर है। मैं उन बच्चों को मिला हूं कैंपस में जाके, मैं कईयों को पूछा मैं क्यों जाना चाहते हो, वो कहता कि सर हमारी जो सब इंस्टीट्यूट है ना, मैं पोस्ट डॉक्टर करके आऊंगा तभी जाके मेरे को यहाँ फैकल्टी रखेंगे, मैं यही करूंगा तो मेरे को नहीं रखेंगे। या आपको सब दिक्कत हुई होगी, आप जब पढ़ के आए होंगे आपको ही दिक्कत हुई होगी। ये ताली बजाने से क्या फायदा, रास्ता निकालो, आप रास्ता निकालो। हमने, सरकार ने कभी इसमें क्यों एक मानक नहीं रहेगा कि इम्प्लीमेंट के पास हमने वन सब्सक्रिप्शन वन इंस्टीट्यूशन, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की, कितने लोगों ने एक्सेस किया, कितने हिट हुए हैं, तब उस इंस्टीट्यूट की रैंकिंग को जोड़ो। सरकार ने लगभग, सरकार की सोवरेन गारंटी को लगा के सारे सरकारी इंस्टीट्यूशंस की, राज्यों का भी, जादवपुर यूनिवर्सिटी भी ले सकता है, आना यूनिवर्सिटी ले सकता है, आना यूनिवर्सिटी, जादव यूनिवर्सिटी, बाकी चीजों में भारत में आप नहीं, आपकी जो ऊपर के लोग हैं आपके राज्य के, वो हमसे आके एनईपी को लेकर झगड़े चलेगा, लेकिन आप तो लाइब्रेरी में आप कनेक्शन तो ले लो। आप दुनिया के, आपने भी जो अच्छा मैगजीन को एक्सेस करना है इसमें करो। हमारी देश की नई पीढ़ी को हम नई दुनिया से वंचित नहीं कर सकते हैं। ये सारा विषय में मैं तो मेरे अनुभव से जो कुछ विषय आया मैं आपके सामने रखा। हॉस्टल्स अच्छे होने चाहिए, प्लेग्राउंड होने ही चाहिए, हर एक कॉलेज में, स्कूल में, स्कूल से लेके हम स्किल और आर्ट को फॉर्मल सब्जेक्ट बना रहे हैं, ये हॉराइजेंटली सभी इंस्टीट्यूशंस में आनी चाहिए। इसके लिए अलग ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट खोलने की कोई आवश्यकता नहीं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को, हमारा डी वो बहुत पर्याप्त है, आप कोलैबोरेट करिए उनके साथ। अगर हमारे बच्चे सेमेस्टर पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के बच्चे आ जाएंगे देश के अच्छे ह्यूमैनिटीज की कॉलेजेस में। आज मैंने देखा इंदौर आईआईटी ने उस राज्य की 5 इंजीनियरिंग कॉलेज की स्टूडेंट्स को एक सेमेस्टर या दो सेमेस्टर, या एक सेमेस्टर, दो सेमेस्टर मध्य प्रदेश की रेपुटेड इंजीनियरिंग कॉलेज की स्टूडेंट को आके आईआईटी इंदौर में पढ़ाते हैं। तब तो जाके क्रॉस होल्डिंग होगा ना। मित्रों, हमें इस चीजों को, हमारे नौजवानों को बहुत वंचित करना नहीं चाहिए। और आने वाले दिनों में मैं आपको बधाई देता हूं, शुभेच्छा भी देता हूं, 2 अपेक्षा रख के जाता हूं कि और इंस्टीट्यूशन उसकी कम से कम इस बार 15,000 तक इंस्टीट्यूशन, 1/3 ऑफ द इंस्टीट्यूशन आ जाए रैंकिंग में। उसके लिए कैंपेनिंग करने की आवश्यकता है। उसके लिए आपको डराना, अभी क्या एनआरएफ डरा देता है, अरे क्यों जाएंगे, परीक्षा देने से फेल होना मान तय है तो हम जाएं क्यों परीक्षा दें। आपको और कैटेगरी बनानी पड़ेगी और ब्रॉड बनानी पड़ेगी, एक दूसरी, और क्वालिटेटिव डाटा पॉइंट के ऊपर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। जो चीज आवश्यकता है, मैंने जैसे मेरे मन में ऐसे ही 2-4 जो विषय आया मैंने उल्लेख किया, और भी कुछ विषय हो सकता है जिसमें एनालिसिस करने की आवश्यकता है, डाटा लेने की आवश्यकता है। कम से कम आने वाले 1-2 साल में, शायद 1-2 साल लगेगा, 1-2 साल के अंदर हम नया रैंकिंग अप्रोच, नया कल्चर के साथ हम आए। अनेक अनेक शुभेच्छा। Thank you, Honorable Minister, for your remarkable address. We look forward to having your esteemed presence in the coming times also with us. To conclude today's ceremony, I now invite Dr. Anil Kumar Nasa to deliver the vote of thanks. Thank you very much, ma'am. It is indeed a privilege to propose a vote of thanks. It is indeed a great moment today that we had witnessed the release of
India Ranking 2025, which is the 10th edition. And during these 10-year, one institution, that is Indian Institute of Technology, Madras, they have shown us at the top position for the last 10 consecutive years in engineering. I really congratulate Dr. Director IIT Madras for achieving such an excellence, and next year we'll be completing another 10 years of another categories also. Well, let's hope for the best for the next year also. And now I honestly thank the Honorable Minister of Education, Shri Dharmendra Pradhan ji, for sharing his thoughts and releasing the ranking of 2025. And we assure that whatever the improvements we can have in our ranking framework, we are definitely ready to do that. And we have been interacting with institutions after the ranking in the roundtable conference. But this year we will start our campaign also and seek the feedback from various institutions for a change in the framework if needed. That may take a year or two as suggested by sir, but we will definitely take the feedback and have their suggestions also. Thank you very much, sir, for gracing the occasion. And I now also thank Honorable Minister of State for Education, Dr. Sukanta Majumdar ji, for sharing his wonderful thoughts. I'm gracing the occasion. Thank you very much, sir. And I thank respected Secretary, sir, Shri Vineet Joshi, sir, for giving us input in views about the NIRF and the ranking release. Thank you very much, sir. And I am also thankful to the chairman AICT, Professor T.G. Sitaram ji, and the chairman of NBA, Professor L.D. Sahasbuddhe, sir. And most importantly, to thanks to all of the institutions who have participated. A big round of applause to all those institutions who have made this tremendous effort. But we'll try our level best to reach this figure of 15,000 as said by the Honorable Minister of Education, sir. And I thank all the directors, vice chancellors, deans, and NBA coordinators, nodal officers, and the senior officials of the Ministry of Education, UGC, NAC, AICT, Director InfibNet. I'm really thankful to all of you. I'm thankful to Director InfibNet for giving us the continuous support for the last 10 years. And heartiest congratulations and thanks very much to InfibNet and its team led by Abhishek, Dharmesh, and Hitesh, Raja, and Kruti. They have been doing day and night work. Thanks to all of you. Big round of applause for the InfibNet team also. And I'm thankful to my team led by Priyanka Singh, Kanchan, Neha, Aman, and others. And I'm thankful to Dr. Jagdish Arora ji also for making this event a grand success. I'm also thankful to all the members of the Implementation Core Committee of NIRF and the Committee of Experts who have been helping us in validating the data. Thank you very much. I'm also thankful to the media persons who have come here to witness this wonderful event. And I once again congratulate all of the institutions who have succeeded in getting their ranks and wish others good luck. I'm thankful to all persons who are also joined online also. Thank you very much. Have a nice time. Thank you. We request the esteemed gathering to kindly rise for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जगधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे You may please be seated, ladies and gentlemen. With this, we conclude today's ceremony. We once again thank our honorable chief guests, our esteemed dignitaries for gracing the event with their benign presence. We thank you all for your participation and support, and we request you to please join us for lunch. The same is being served on the floor below. The venue for lunch is the same as tea. Thank you very much, and we wish you a great day ahead. Thank you.